Assalamu alaikum dear students, कैसे हैं आप सब? My name is Rayan Malik and I am here to teach you physics class 9th. In this lecture, we are going to solve remaining numericals of chapter number 8. Let's start the lecture. Numerical number 8.4. A balloon contains 1.2 meter cube air at 15 degrees Celsius. Find its volume at 40 degrees Celsius. Temperature coefficient of volume expansion of air is 3.67 into 10 raised to the power minus 3 per Kelvin. एक बैलून जिसका वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब, टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस. आपने उसका बेसिकली न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस एंड यू हैव द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज इक्वल टू 3.67 into 10 raised to the power minus 3 per Kelvin. So first of all हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. So डाटा के अकॉर्डिंग आपको गिवन है V नॉट विच इज द ओरिजिनल वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब और आपको टेम्परेचर T1 बता दिया गया है विच इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस. तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में. इस 15 में हम ऐड कर लेंगे 273 एंड इट बिकम्स 288 केल्विन. सिमिलरली हमें टेम्परेचर T2 गिवन है विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस. इस 40 में भी हम 273 ऐड कर लेंगे एंड विच इज इक्वल टू 313 केल्विन. यहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी गिवन है विच इज बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 3.67 into 10 raised to the power minus 3 per Kelvin. You just have to find the new volume V that is equal to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. Before going to solve it, first of all हम delta T find कर लेते हैं which is change in temperature and delta T which is equals to T2 minus T1. Just we have to put the values in it. T2 is 313 Kelvin minus T1 is 288 Kelvin. सिंपली इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 Kelvin. This is delta T. Now we can easily find the new volume V which is equals to V is equal to V naught 1 plus beta delta T. Simply we have to put the values in it. So V is equals to V naught है 1.2 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 3.67 into 10 raised to the power minus 3 और डेल्टा T है 25 केल्विन. इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर. सो V is equals to 1.2 into 1 प्लस 20 को इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.67 into 10 raised to the power minus 3 that is equal to 0.09175. इस वैल्यू में हम 1 ऐड करेंगे it becomes 1.09175. फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2 से एंड द आंसर इज 1.3 मीटर क्यूब. दिस इज द न्यू वॉल्यूम. क्लियर? नाउ यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट. A balloon's volume
volume at 40 degrees Celsius is equal to 1.3 meter cube. Clear? Numerical number 8.5. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kilogram of water from 10 degrees Celsius to 65 degree Celsius? So, एक वाटर जो कि 0.5 किलोग्राम है, आप उसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके 65 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है. इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस न्यूमेरिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा में आपको मैच बता दिया गया है, इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम. टेम्परेचर T1 है 10 डिग्री सेल्सियस. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड किया करते हैं and it becomes 283 Kelvin. Now the temperature T2, which is equal to 65 degrees Celsius. So 65 plus 273, and that is equal to 338 Kelvin. And we have to find amount of heat, which is Q. That is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So first of all हम find कर लेते हैं delta T, which is change in temperature, and that is equal to T2 minus T1. So 338 Kelvin minus T1 है 283 केल्विन. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 केल्विन. दिस इज डेल्टा T. नाउ वी कैन इजीली फाइंड Q by using the formula Q is equals to MC delta T. Just we have to put the values in it, as the mass is 0.5 kilogram, C which is 4200 joule per kilogram per Kelvin, because water की specific heat capacity की वैल्यू होती है 4200 joule per kilogram per Kelvin, और ये constant वैल्यू है जो कि आपको याद होनी चाहिए. And delta T which is 55 Kelvin. So further इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 into 4200, which is equals to 2100 into 55. So 2100 into 55, that is equals to 115500 joule. This is Q. Clear? Now write down the result. So 115500 joule of heat is required. To increase the temperature of water. Increase the temperature of water. Clear? Numerical number 8.6. An electric heater supplies heat at the rate of 1000 joule per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस? सो एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो हीट सप्लाई कर रहा है एट द रेट ऑफ
1000 जूल पर सेकेंड। सो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि एक वाटर जिसका मास है 200 ग्राम, आप उसका टेम्परेचर राइज करना हो 20 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर हमें रेट ऑफ हीट गिवन है विच इज Q बाय T एंड विच इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। इस तरह आपको मास बता दिया गया है विच इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, और आप जानते हैं कि किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड किया करते हैं। Now the answer is 0.2 kilogram. Temperature T1 है 20 degree Celsius and that is equal to 20 plus 273 is equals to 293 Kelvin. Temperature T2 है 90 degree Celsius. So 90 में भी हम 273 ऐड करेंगे and it becomes 363 Kelvin. So हमने फाइंड करना है टाइम T that is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that Q is equals to MC delta T. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 minus T1. Just we have to put the values in it. T2 is 363 minus T1 is 293 Kelvin. और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 Kelvin. This is delta T. अब अगर हम इस फॉर्मूला को Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T को टाइम से डिवाइड कर दें तो Q भी यहाँ पर टाइम से डिवाइड हो जाएगा और MC डेल्टा T भी यहाँ पर टाइम से डिवाइड हो जाएगा। सो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये T फाइंड आउट करना है। सो इस T को मैं यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर आके डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा T इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T divided by Q divided by T. So just we have to put the values in it. So T is equal to mass which is 0.2 kilogram and C is the specific heat capacity of water which is equals to 4200 joule per kilogram per Kelvin. ये constant value है जो कि आपको याद होनी चाहिए। डेल्टा T जो कि आपने फाइंड किया which is equal to 70 Kelvin divided by Q by T which is equals to 1000. न्यूमरेटर वैल्यू को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 58800 केल्विन, 58,800 डिवाइड बाय 1000। तो फर्दर इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से एंड यू गॉट द फाइनल आंसर विच इज 58.8 seconds. This is the time required. Clear? Now just we have to write down the result. Is 58.8 second is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degrees Celsius to 90 degree Celsius. Clear? Numerical number 8.7. How much ice will melt by 50,000 joule of heat? Latent heat of fusion of ice is equal to 336,000 joule per kilogram.
सो कितनी आइस मेल्ट होगी, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ आइस विच मेल्ट्स, कि जिसको आप 50,000 जाउल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहां पर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है दैट इज 336,000 joule per kilogram. First of all, we have to note down the data first, as the Q amount of heat which is 50,000 joule, and the latent heat of fusion HF which is 33600 joule per kilogram, and we have to find mass which is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write down solution. We know that delta Q is equals to MHF. As we have to find M mass, तो HF को हम यहाँ पर आके delta Q से divide कर देते हैं. So M का फॉर्मूला बन जाएगा M is equals to delta Q over HF. Thus we have to put the values in it, as delta Q is 50,000 and HF is 336,000. So ये 3 zeros इन 3 zeros से cancel out हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा M is equals to 50 over 336. फर्दर इसको जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.15 किलोग्राम, विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स में. सो 0.5 किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 raised to the power 3. तो हम किलो की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे 10 raised to the power 3. नाउ इट इज इन ग्राम. सो 0.15 into 10 raised to the power 3, which is equals to 150 gram. This is the mass of ice which melts. Clear? So now we have to write down the result. So 150 gram of ice will melt by 50,000 joule of heat. Clear? I hope ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.